Hello and welcome back again. So this will be part two for Ibn Battuta because Ibn Battuta is taking time for us to do. So let's move on to the point where we were. We were discussing cities. We discussed cities. Cities में हमने important जो features हैं, bazaars का जो feature है, agriculture and trade का जो feature है वो देख लिया. The new Delhi के बारे में from the source we discussed the rampart and all how the kind of these things the Buddha Darwaza, Mandavi Darwaza, Gul Darwaza, all these things, so you have to kind of remember, not for you, even if they are not asked in MCQ, you can obviously add them in your answers. And as we have seen, directly Delhi se related question aa chukka hai in your 4 marks. Now, next hai Daulatabad. So Delhi se related question already has been asked, and there are chances कि Daulatabad से related source based question may be asked in the normal question. जो नॉर्मल क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है 4 मार्क्स में इससे भी पूछ सकते हैं. एंड इस सोर्स में ही इब्न बतूता स्पेसिफिकली मेंशंस अबाउट द म्यूजिक एंड द मार्केट एरिया ऑफ दौलताबाद, जहाँ पे एक तरीके से सिंगर्स एंड ऑल का क्या सिनारियो था. तो अब दौलताबाद में ही टॉक्स अबाउट अ मार्केट प्लेस जहाँ पे मेल एंड फीमेल सिंगर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, विच इज नोन एज ताराबाद. And then ये he says कि great, it is one of the greatest most beautiful bazaars. It has numerous shops और हर शॉप में हमें देखने के लिए मिलेगा एक door which leads into the house of the owner. The shops are decorated with carpets and at the center of a shop there is a swing on which sits the female singer. तो female singer वहाँ पे हमें शॉप में देखने के लिए मिल जाती है हर शॉप में. She is decked with all kinds of finery and her female attendants swing her while she sings. Now, in the middle of the marketplace, अब मार्केट प्लेस जो है उसमें मिडिल में हमें एक देखने के लिए मिलेगा लार्ज कपोला. कपोला इज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर एंड उसके it has a space for you to like sit and you know for people to sit. तो ये हमें मार्केट प्लेस में मिडिल में मिलता है which is carpeted and decorated. And यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे चीफ ऑफ म्यूजिशियंस डेली takes his place every थर्सडे को आफ्टर द डाउन प्रेस अकम्पनीड बाय हिज सर्वेंट्स एंड स्लेव्स. तो यहाँ पे हमें थर्सडे को ये सिनेरियो देखने के लिए मिलता है इन दी बाजार्स. फीमेल सिंगर्स जो हैं कम इन सक्सेसिव क्राउड्स. They sing before him, dance until dusk. So this is, the kind of, we can say, the cultural significance of the market, which we can see during the Tughlaq dynasty, specifically during the Muhammad bin Tughlaq time period, जो इब्न बतूता हमें बता रहा है. Now, in the bazaars, there are mosques for offering prayers, and mosques we have. Then, sometimes the Hindu rulers and even Muslim rulers, when they were traveling through the market area, they used to, specifically like just wait and look at the music, listen to the music, look at the singer, you can say. Now, being having done this, we can revisit the question that was asked in like 8 marks. यहाँ पे examine how Ibn Battuta's account enable historians to reconstruct the urban life. Urban life में we can add about the cities, we can write about the agriculture and all, about the the markets. ये चीजें हम लिख सकते हैं. Bazaars, agriculture, trade. Then you can mention little bit about Delhi and Daulatabad. Now we have to read about the Indian system of communication. And urban life में we will also include all these things like system of communication जो है वो भी include हो सकता है. Even in fact the topic of female slavery, female slaves जो हैं वो भी include हो सकता है, because urban life, the life in the cities, how it was. So you can include every aspect, like the social aspect, the economical aspect, the political aspect. So you have to keep your answer kind of एक तरीके से अपने आंसर को, हमें यहाँ पे स्कोप जो है आंसर का वो ज्यादा बड़ा रखना है. नाउ स्टेट एविडेंटली टुक स्पेशल मेजर टू इनकरेज मर्चेंट्स. तो ये कम्युनिकेशन के बारे में जब इब्न बतूता बात करता है तो ये कहता है कि स्टेट ने स्पेशल मेजर्स लिए. क्या वो मेजर्स थे? तो मेजर्स में हम देखते हैं कि जो ऑल ट्रेड रूट्स
they were well supplied with inns and guest houses. So time to time you will see distance, थोड़े थोड़े distance के बाद हमें inns and guest houses मिल जाएंगे for traders and for the merchants to rest. Ibn Battuta was also amazed by the efficiency of the postal system. So he kind of was amazed by the efficiency of the postal system. Postal system के बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा सा जो है इस पे फोकस करना होगा, which allowed merchants to not only send information and remit credit across long distance, but also to dispatch goods required at short notice. ये जो postal system है, it was fast, it was efficient, it helped the merchants to send information, remit credits, and then also dispatch goods which were kind of required at short notice. The postal system was so efficient that while it took 50 days to reach Delhi from Sindh, न्यूज रिपोर्ट ऑफ स्पाइस जो है वो सुल्तान तक पहुंच जाएंगी जस्ट इन 5 days. सो जस्ट लुक एट द एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम. सोर्स हमें यहाँ पे एक है जो कम्युनिकेशन सिस्टम पे टॉक्स अबाउट. सो यहाँ वी विल सी कि पोस्टल सिस्टम को इब्न बतूता डिस्क्राइब कर रहा है एंड ही सेज कि ये दो टाइप के होते हैं. एक होता है हॉर्स पोस्ट. हॉर्स पोस्ट में क्या होता है, इसको कहा जाता है उलुक. सो यू कैन जस्ट whenever there is a question related to sources of communication, so you can mention about postal system which was efficient, and then it included uh, इसमें हमें दो टाइप्स के टू काइंड्स ऑफ पोस्टल सिस्टम देखने के लिए मिल जा रहे हैं. हॉर्स पोस्ट है जिसको उलुक कहा जाता है. इसमें रॉयल हॉर्सेस हॉर्सेस जो है सॉरी वो पार्टिसिपेट करेंगे स्टेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 miles. तो 4 miles पे यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट रॉयल हॉर्सेस स्टेशन रहेंगे. फुट पोस्ट हैज 3 stations per mile. तो फर्स्ट फुट पोस्ट पे हम देखने के लिए मिलेंगे कि 3 स्टेशन है पर माइल पे. एंड ये कहा इसे कहा जाता है दवा. दवा एंड दिस इज 1/3 of a mile. 1/3 of a mile दवा. ये इसको जस्ट you can just remember the foot post was called dava. And most important thing that you need to remember from this portion is that foot post जो था वो quicker था than the horse post, because see the frequency, यहाँ पे 3 stations पर माइल है. यहाँ पे एक तरीके से एवरी 4 miles पे हमें एक घोड़ा देखने के लिए रॉयल हॉर्स देखने के लिए मिल रहा है, द हॉर्समैन. सो विच इज गोइंग टू बी एफिशिएंट, दिस वन. एंड it is all often it is used to transport the fruits of Khurasan which are much desired in India. So ये यहाँ पे you can again add this point to your answer. Now coming back to the questions, we can see that describe Ibn Battuta's description of Indian system of communication. So for 4 marks, you cannot just write this thing, okay? जो एनसीईआरटी में नॉर्मली दिया गया है, इसमें 4 marks में हम सिर्फ ये नहीं लिख सकते, बिकॉज इसमें what the problem is that कि there aren't enough what to say keywords that needs to be there in answer. डेटा है, 5 days का डेटा है, एफिशिएंसी का डेटा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन के लिए फर्स्ट यू कैन से कि इनकरेज किया मर्चेंट्स को, एंड उसके लिए जो मेजर्स थे तो वो थे इंस एंड गेस्ट. सो दिस दिस विल बिकम योर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो पोस्टल सिस्टम विल बिकम योर सेकेंड पॉइंट. एंड विद इन द पोस्टल सिस्टम यू विल सी कि यू विल से दैट हाउ इट हेल्प द मर्चेंट्स. मर्चेंट्स इनकरेज करने के लिए मर्चेंट्स को इंकरेज करने के लिए पोस्टल सिस्टम जो था, इट वाज काइंड ऑफ यूज्ड टू सेंड इंफॉर्मेशन, रेमिट क्रेडिट्स, डिस्पेंसेस, डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस, ये चीजें. देन पोस्टल सिस्टम हम देखते हैं कि इट वाज एफिशिएंट. अब पोस्टल सिस्टम एफिशिएंट था, स्पाइस एंड ऑल के जो भी रिपोर्ट्स थे वो काफी जल्दी पहुंच जाते थे. सो दिस विल बिकम योर लाइक दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. देन पोस्टल सिस्टम जो है वो सेकंड पॉइंट बन जाता है, उसको इलाबोरेट करेंगे हम, एंड उसमें हम लिखेंगे कि पोस्टल सिस्टम वाज काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर द मर्चेंट्स. एक तो इनकरेज कर रहा था मर्चेंट्स, तो इसी के विद इन आ जाता है. बट यू हैव टू राइट कि it was not only, you have to remember understand कि postal system was not only for merchants, it was also for the king, the sultan, to get the information from different regions. तो यहाँ पे दो
एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसके यूज थे। अब पोस्टल सिस्टम को अगर हम और एक तरीके से इसमें पॉइंट्स ऐड करेंगे तो हॉर्स पोस्ट और फुट पोस्ट, तो ये तुम्हारा, अगर हम इसको थर्ड पॉइंट मान लेते हैं या फिर हम इसको दो पॉइंट बना लेते हैं कि हॉर्स पोस्ट था, उसको लोग बोलते हैं, एंड देन यहाँ पे दवा था। एंड इसमें भी यू डू नॉट नीड टू द स्टेशंस को अगर नहीं भी मेंशन करो, यू कैन जस्ट राइट एट द एंड कि फुट पोस्ट क्विकर था देन हॉर्स पोस्ट। एंड कौन से फ्रूट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए ये यूज किया जा रहा था, तो राशन से मतलब कौन से रीजन से फ्रूट्स के लिए फ्रूट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जा रहा था, दैट रीजन इज खुरासन विच आर मच डिजायर्ड इन इंडिया, द फ्रूट्स ऑफ खुरासन रीजन। तो ये इस तरीके से हमें पोस्टल सिस्टम को भी इलाबोरेट करना है एंड मर्चेंट्स के लिए क्या किया गया उसको भी इलाबोरेट करना है। दिस इज हाउ योर 4 मार्क questions will you know be ready. So you cannot write just you cannot just write this and think that you will get 4 marks. Maybe you will get three and a half, but adding this will increase the chances of getting you full marks in this question. Female slaves is another important topic. अब ये है कि it will provide you information about the societal position of females in the society and एक तरीके से स्लेव्स का क्या सिस्टम था। अब इब्न बतूता के अकाउंट से हमें पता चलता है कि कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन था अमंग द स्लेव्स। द स्लेव्स भी अलग अलग कैटेगरी के थे। But the female slaves थी, they were in the service of the sultan, and they were experts in music and dance. So यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि they were mainly there to provide the entertainment to the sultan. And female slaves were also employed by sultan to keep a watch on his nobles. तो यहाँ पे दो यूजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं फीमेल स्लेव्स की। फर्स्ट है फॉर द entertainment purposes, सेकंड है to keep a watch on his nobles, to function as spies. Female slaves, again, then we see slaves were generally used for domestic labor. तो general use क्या था, domestic labor था। And Ibn Battuta found their services particularly indispensable for carrying women and men on palanquins और डोला। तो डोला उठाने के लिए जो है उसके लिए they were very you know uh, important, these slaves। slaves के प्राइस के बारे में बात करें अगर हम, so you will see the price of slaves, particularly female slaves required for domestic labor was very low. तो प्राइस जो है वो काफी लो रहेगा एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ड्यूरिंग द 14th century they will have at least one or two of them. Now the normal families जो है उनके पास जो slaves होंगी they will generally keep these slaves for domestic labor purposes. Then female slaves पे एक source है and this source elaborates the function of the female slaves and spies, and you can see this is kind of giving us another dimension of the word slaves. Like they were kind of slaves, but they were into something much greater than that, not just slavery. And they were kind of a tool of, you can say, the sultan to keep an eye on the nobles. So यहाँ पे हम देखते हैं कि it is the habit of the emperor to keep the with every noble, great or small, one of his slaves who spies on the nobles. So it is a slavery system. The spy system जो है, it was run by the female slaves in the court. You can understand that. And he also appoints female scavengers, very important term. You can write it in in your wherever there is question related to this, female scavengers को याद, एक तरीके से इस टर्म को याद रखो। what was their function? They entered the houses unannounced, and जो भी slave girls होती थी, तो with the, who were like there, तो उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, they were supposed to give all the information to this female scavenger. So this is she's kind of like going and taking away all the information all the the female slaves have. So this is kind of a spy system which the emperor had within the court, or you can say the household area arena. So this is it
we are done with it. क्वेश्चन यहाँ पे स्लेव से रिलेटेड एक आया हुआ है, यू कैन लुक एट इट. इसमें कंपैरेटिवली दिया गया है. बर्नियर की सती सिस्टम को भी डिस्कस करना है एंड आइडियाज ऑफ इब्न बतूता ऑन फीमेल स्लेवरी को भी डिस्कस करना है. So you have to write the female slaves के जो हमने पॉइंट डिस्कस किया, एंड आई होप दैट यू लाइक्ड दिस वीडियो बिकॉज अभी इस चैप्टर की स्टिल द बर्नियर जो है उसका अकाउंट रह गया है. देन वी विल बी मूविंग ऑन टू सूफिज्म and Vijayanagar Empire, and then you have the that last chapter of related to Mughal Empire. So I'll be uploading it soon, but please focus on the points that I have mentioned. मैंने जो points mention किए हैं उस पे focus करके रखें and read your NCRTs properly. But now you know how to read. Don't ignore the sources; they are important. If you see that any kind of source can be helpful for your NCRT answer writing, so you can always include that. So do like this video, share this video with your friends, and subscribe to our YouTube channel.